Okay students, our next standard inverse trigonometric function is given as y is equal to cos sec inverse of x, where mod of x greater than equal to 1 and y, the range of y is minus pi by 2 to plus pi by 2 and y should not equal to 0. Okay, then dy by dx means first order derivative of y with respect to x is minus 1 upon x under root of x square minus 1. Okay, this condition is fulfilled when x greater than 1. The value of x is greater than 1, then dy by dx is equal to minus 1 upon x under root of x square minus 1, and when x is less than minus 1, the value of x is less than minus 1, then then the derivative of cosec inverse of x is given as 1 upon x under root of x square minus 1. Means when x is positive, then derivative of cosec inverse of x is negative, and when x is less than minus 1, then dy by dx is positive. Okay, let us prove this result. The proof of this result is given as, since y is equal to cosec inverse of x, then x is equal to cosec of y, and the next step is taking derivative of x with respect to y. We get dx upon dy is equal to, and derivative of cosec of y with respect to y is minus cosec of y into cot of y. And since we have to find dy by dx, so taking the reciprocal of this term, we have dy by dx is equal to minus 1 upon cosec of y into cot of y. Okay, we have dy by dx is equal to minus 1 upon, since cosec y can be replaced by x directly, but there is no any relationship of cot y with x. यहाँ पे cot y का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप x से नहीं है. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि we have to find dy by dx in the form of x. हमें डेरिवेटिव x के फॉर्म में चाहिए. Okay, so we have to convert cosec y which is replaced by x easily, but cot y cannot be replaced by x directly, so we have to convert cot y in the form of cosec y, क्योंकि cosec y का रिलेशनशिप x से है. so हम कैसे लिख सकते हैं इसको आप ऐसे cosec y कॉपी पेस्ट कर दीजिए. cot y means under root of cosec square of y minus 1. Since we know that 1 plus cot square x is equal to cosec square x, यहाँ पे क्या है? cot y है. cot y को हमें cosec y में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है? मैंने बताया क्योंकि हमें x से रिप्लेस करना है. so cot y is equal to under root of cosec square y minus 1. अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो. so we have dy by dx is equal to minus 1 upon cosec y is x under root of cosec y is x. so यहाँ पे स्क्वायर है तो x square minus 1. this one is our derivative of cosec inverse of x. जब x आपका जब x 1 से बड़ा रहेगा तो आपको ये वाला यूज करना है, और जब आपका x minus 1 यूज करना है तो यहाँ लिखोगे when x is greater than 1 and dy by dx is equal to 1 upon x under root of x square minus 1,
when x is less than -1. ओके, ऐसा आपके एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की। आप एटलीस्ट इतना तो याद रखो, एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपके। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x when y is given as cosec inverse of x is -1 upon x under root of x square minus 1। ठीक है, नोट कीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है, याद करते रहिए और एक्सरसाइज। लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज।